Okay, so Pranatira out a question. One second. Yes, so yesterday we have complete unit 4. And we will start unit 5 today. Accountability and control. अच्छा प्रणतिर गोटे क्वेश्चन थिला in actual sense are the principle of Taylor applicable in working place government sector? Yes, Pranati. Taylor principle, some of the principle of Taylor are applicable in government sector. Taylor's principle applicable in government sector. Can anyone tell which of the principle are applicable in government sector? Unmute anyone, unmute and you can tell that what do you think that Taylor co principle ta government sector re applicable he paribo? Sir, scientific selection, scientific training. Yes, scientific selection, scientific training, good. Au kichi? Functional foremanship भी ହେଇପାରିବ specialization ଏବେ government ରେ specialization ଅଛି government focus on specialization so functional foremanship ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ time study Sir, spirit decox. yes देखो टाइम स्टडी मोशन स्टडी केमती ही परिबो ने गवर्नमेंट सेक्टर रे भी देयर आर मेनी वर्क टू डू so we try to finish a work in a particular time स्टडी हमें कहि परिबा ताको esprit de this is Taylor Taylor principle के Fowler principle Sir, Fowler principle. हाँ Fowler principle ना Okay. एटा तमे कहि परिबो मेंटल रिवोल्यूशन रे सीनियर एंड सबऑर्डिनेट सीनियर और सबऑर्डिनेट मानक भितर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहिले एडमिनिस्ट्रेशन रे एफिशिएंसी बढ़िबो सो मेंटल रिवोल्यूशन गुटे कहि परिबो तापरे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन कहि परिबो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन इज नथिंग बट इट इज डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन हे परिबो Sir, division of responsibility. division of responsibility Standardization of work. division of responsibility standardization of work The differential wage system. differential ways piece rate system of payment देखो piece rate system of payment टा गवर्नमेंट रे टिके एप्लीकेबल हे परिबो नाही एटा प्राइवेट सेक्टर रे एप्लीकेबल हे परिबो तमे तीन चारटा कहला पर से माने कहबे से माने तुमको 10 टा पचारिबे नाही इफ यू से 3 4 से माने कहबे ओके Sir,
cooperation among between Yes, mentor evolution. manager and a Mentor evolution. That is mentor evolution. Cooperation between employee and manager. তিনটা চারটা কহিদেব ସେମାନେ କହିବେ ହେଇଗଲା। So in actual sense, principle of Taylor's principle also applicable in government sector. So these are the Taylor's principle that can applicable in government sector. Likewise, तुमको जदि fuel गली करबी पचारिबे तमे दी तीनटा प्रिंसिपल कहि परिबो। तापरे how can you efficiency of the domain? अच्छा efficiency देखो government रो efficiency बढ़ेवा पई there are many things that we have discussed in second ARC ହେଲା personal administration रे ହେଲା। अच्छा तमे गोटे इन फ्यूचर तमे गोटे एडमिनिस्ट्रेटर हबो तमे गवर्नमेंट तमे तमरो ब्लॉक रे एडमिशन तमरो पोस्टिंग हैला कि तहसील रे पोस्टिंग हैला हाउ डू यू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जदि ए क्वेश्चन तुमको पचारिबे अच्छा तमे बहुत एफिशिएंसी कथा कहउचो तमे गोटे ब्लॉक रे तुमको दिया गला पोस्टिंग व्हाट स्टेप यू टेक एटा मु पचारुची तुमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सो यू आर पोस्टेड एज ए वीडियो गोटे तुम वीडियो हिसाब रे पोस्टिंग हेलो व्हाट स्टेप यू टेक टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर ब्लॉक step you take to increase efficiency Channel of communication. हाँ को तापस sir monitoring अच्छा हमें monitor work of other worker monitor subordinate informal communication. Sir, review and sharing meetings regarding different issues they are facing. What are the problems they are facing while implementing or executing policies? अच्छा So they can share their problem. सेटा कहि परिबो solve subordinates problem Yes, sir. solve Sir, grievance redressal, sir. by your subordinate अच्छा ग्रीवेंस रिड्यूसल कहाँ रो तमरो एम्प्लॉई रो कि सिटीजन रो Sir, citizen. grievance redressal of citizen don't you think that your employees grievance also you should need redress तमरो सबऑर्डिनेट मानक रो जदी किछि ग्रीवेंस अछि एज ए सुपीरियर देखो जेमति बिहेवियरल थ्योरिस्ट रे तमे पढिछो चेस्टर बर्नार्ड कोन कहिछि चेस्टर बर्नार्ड जदी तुमको मने थिबो चेस्टर बर्नार्ड द फर्स्ट बिहेवियरलिस्ट ही हैज सेड zone of indifference zone of acceptance and a manager should be behave like a mature psychologist to increase the zone of indifference and decrease the zone of denial in the mind of subordinate so that subordinate will give his fullest to the organization so you can increase the efficiency of the organization when your subordinate are trained subordinate are properly motivated yes decentralization you monitor your work hela you monitor the work of your subordinate promote informal approach use of IT and yes you should act like a leader to solve your subordinates problem Sir, incorporating best practices from other blocks. yes ସେଟା ହେଇପାରେ Sir, then promoting esprit de corps between employees. best practice proper coordination ଏଇଟା ହେଇଗଲା coordination proper coordination ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ spirit the corp ହେଇଯିବ Okay, sir. motivate subordinate
हैला एति की कले तमे एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ी जीवो आ इठी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कथा कहबा नै हैला ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हाँ हाइजीन फैक्टर मोटिवेटर सेटा भी कहि पारो तमे बट एठी गुटे ऑर्गेनाइजेशन रे हमें 100 एम्प्लॉय काम करूछु समस्त और एफिशिएंसी बढ़िबो जदी ऑर्गेनाइजेशन रे एफिशिएंसी बढ़िबो every individual's efficiency you need to focus on every individual sort out their problem motivate them redress their grievance so that they give their 100% to the organization automatically efficiency बढ़ी गला गोटे एग्जांपल दोउची गोटे क्लार्क अछि तमरो से काम करूनी तो से जेतबेले काम करूनी फाइल ता ता पाखरे अटकी रहउची सेटा इंपैक्ट पड़िबो आ 5-6 लोकन ऊपर इंपैक्ट पड़िबो ओके So this is how you increase the efficiency of your subordinate. ହେଲା ठीक अछि एटा efficiency ही गला accountability and control टिके important unit accountability and control रे legislative executive judicial control এটা মতে লাগুনি পচারিবে বলি but again it is easy judicial control জানিছো judicial review judicial activism PIL writ these are judicial control एथिरु जुडिशियरी क्वेश्चन पळे आसीबो कि जुडिशियल रिव्यू कोन द कांसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कोन एटा क्वेश्चन आसी पारे ए एंगल रे जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बाबद रे माने मे बी जदि से माने सेठी की जानती जुडिशियरी ऊपर क्वेश्चन सो इट कैन लीड टू एनी एक्सटेंट judicial overreach kono पचारि पारंती तुमको व्हाट इज जुडिशियल ओवररीच डू यू थिंक जुडिशियल ओवररीच इज माने गुड और बैड तापर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रे जानिचो ट्रांसफर प्रमोशन पेनल एक्शन लेजिस्लेटिव कंट्रोल रे पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव जहा जानिचो क्वेश्चन डिबेट मोशन ई सब जिंस हबो तापर सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन हां को सर गोटे क्वेश्चन जो या पूर्व क्वेश्चन पचारथिले मु सेठी गोटे क्वेश्चन हर मध्य पचारथिले जे तुमको मन कुआजीबो चूज करिया पे इन बिटवीन डिसऑनेस्ट गोटे जणे अछंती डिसऑनेस्ट एंड एफिशिएंट आ जणे अछंती ऑनेस्ट एंड इनएफिशिएंट तुमे काहा को चूज करिवो माने ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट ना सर सेमती नहीं डिसऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट आ एफिशिएंट अछि आ गोटे ऑनेस्ट अछि इनएफिशिएंट अछि अच्छा दीटा लोक अछंती ए और बी गोटे अछि आज्ञा एफिशिएंट लोक अछि बट ही इज डिसऑनेस्ट आज्ञा आ गोटे अछि इनएफिशिएंट अछि बट सेटा आ ऑनेस्ट गोटे लोक अछि आज्ञा तमे ऑनेस्ट को ही चूज करिवो देखो प्रैक्टिकली तमे जहा करो बट इंटरव्यू रे तमे ऑनेस्ट लोक को चूज करिवो डिसऑनेस्ट चूज करो माने तम भितरे भी डिसऑनेस्टी अछि एटा बट तार प्रैक्टिकली तो इनएफिशिएंट लोक माने अरे तमे इम्प्लॉयटा ताको एफिशिएंट करि दबो inefficient say na you need to try to find out what is the reason of his inefficiency किसी तो रीजन थबो देखो गोटे डिसऑनेस्ट लोक को ऑनेस्ट करिवाटा इट इज वेरी डिफिकल्ट बट गोटे इनएफिशिएंट लोक को तमे ट्रेनिंग देकी काउंसलिंग देकी मोटिवेट देकी थ्रेट देकी तमे तारो एफिशिएंसी बढ़ाई परिबो बट इट इज डिफिकल्ट गोटे डाकू को तमे सेंड करिवाटा बहुत डिफिकल्ट एंड सबले ऑनेस्टी इज मोर इंपोर्टेंट एंड एफिशिएंट लोक जेतबेले गोटे लोक डिसऑनेस्ट हैला ना एफिशिएंट हेले भी अल्टीमेटली इनएफिशिएंसी बढ़ी जाए in a long run that dishonest person who is so called efficient he will ultimately result into loss of the organization loss of citizen welfare loss of development so never ever you can choose a dishonest people it a more opinion and सर डिसऑनेस्ट जे थिबो भी तार मोरल आ एथिकल वैल्यू भी डेवलप करले से ऑनेस्ट भी ही पारे जदि सेमती काउंटर करंती sir it is difficult गोटे करप्ट लोक को ठीक करिवाटा सर इट इज डिफिकल्ट बट गोटे इनएफिशिएंट लोक को एफिशिएंट करिवाटा इजी सेटा तमे तांको काउंटर करिवा एंड दैट इज ट्रू तमे भी कहो केबे भी माने बोर्ड वाला भी तुमको पसंद करिवे की
ତମେ ଯଦି କହିବ କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଲୋକକୁ ଚୁଜ୍ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସଅନେଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବି, ଗୋଟେ ମାନେ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟିକ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ଯେତେ ଲୋକ ଅଛ ମାନେ एवरीवन हु इज सिटिंग हियर, यू आल्सो थिंक इज इट डू यू तमे गोटे बोर्ड रे बसी थांतो तमे पसंद करंदो कि कहीं पसंद करंदो नहीं? तो इन माय ओपिनियन यू शुड से सर आई विल चूज, हाँ I will choose the person who is an honest guy but he is inefficient. Again, I try to find out the reason of his inefficiency, and based on the reason, I will ensure that he will get training, he will get counseling, he will get motivation, or he will I will thread him, and I will make him efficient. It is comparatively easy, but to make someone honest, to make some dishonest guy honest, it is difficult. ହେଲା এটা ମୋର ଓପିନିଅନ୍। ଆଉ ବାହାରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଓପିନିଅନ୍ ଅଛି ତ କହିପାର, ବଟ୍ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇକି ମୁଁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିଥାନ୍ତି। ये सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ଆମେ ସବୁବେଳେ କରପ୍ସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା, କେବେ ବି ତମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ଇନ୍ ରିଏଲିଟି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଅଛ ସେଠି, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନରେ ମେ ବି ତମେ ଥିଙ୍କ କରିପାର एफिशिएंट लोक, बट इंटरव्यू रे केबे भी तो सेमाने कहि देबे जदि ए गुटे डिसऑनेस्ट लोक को चूज कला तो आ भितरे भी ये भी डिसऑनेस्ट हेते पारे, तो दे विल नेवर एप्रिशिएट यू। ओके सर। हार्ड टू चेंज, यस। तापर सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन रे एठी हमें पढितिला सिटीजन्स रिलेशन विथ एडमिनिस्ट्रेशन, that citizen has emotional relation with administration NPA, no emotional relation with administration NPM, emotional plus no emotional NPS a new public service approach। तो ये कौन क्वेश्चन पचारिबे मु भी जानि पारुनी, आमे तो गोटे माने लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हिसाब रे आकु पढिछु सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Citizens participation in administration and citizen in administration both are different thing। Citizen and administration is citizen's relation with administration, how a citizen is relate with the administration, and citizen participation in administration रे एटे जो people's participation, एटी जो हमरो जो diagram 1991 1992 1997 2000 2005 2015, the good governance paradigm citizen participation in administration, पंचायत राज citizen participation in administration, ग्राम सभा, citizen charter, IT, second ARC, नीति आयोग, these are different administrative reform taken in India which facilitate citizens participation in administration। civil society, civil society रो तो definition पचारिबे नाही, तमको पचारिबे what are the roles civil society play, तो सेठी तमे करेंट एग्जांपल देई परिबो कि सिविल सोसाइटी रो रोल, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन कोन मेंटेनिंग पीस, सोशल हार्मोनी, तापरे कोविड टाइम रे सिविल सोसाइटी रो रोल, एंड कस्टोडियल डेथ जम्मू कश्मीर रे पीस रे सिविल सोसाइटी रो रोल। तो सिविल सोसाइटी सोशल कैपिटल बढ़ाए, you can say something like this, that these are the role of civil society। people's participation in administration, RTI बाबद रे आउ माने RTI बाबद रे तो समस्त जानिछो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अच्छा what is the limitation of RTI जदि पचारि पारंती, what is the limitation of RTI, you can say 2-3 limitation of RTI। and yes question आसी पारे, do you think RTI is a hindrance before administration, तो तमे कहिबो नो सर, RTI increase transparency accountability in administration, but some people are misusing RTI to harass public servant, that need to be checked।
RTI ର section शुभ कल्याणी RTI रे section ସେଇଟା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କୁହ। ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଯୋଉ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରନ୍ତି କୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି ପବ୍ଲିକ କୁ ସେଇ ସେକ୍ସନ ଟା ପଚାରିଥାନ୍ତି ପଚାରିଥିଲେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ। ଯାହାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଅଲରେଡି ଚାକିରିରେ ଥିଲା? ସାର୍ ସେଇଟା ମନେ ପଡୁନି ବଟ୍ ସେ କହିଥିଲେ ମାନେ କୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି ପବ୍ଲିକ କୁ। ଦେଖ ସେଇଟା ଏକ୍ସେପସନ କଣ RTI ରୁ? ତମେ ଏବେ ORS ଅଛ ତମେ ସେଇଟା କହିପାରିବ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହାଉ ହି ସପୋଜ ଟୁ नो। ହଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହିପାରିବ କି ସାର୍ ଇନଫର୍ମେସନ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, डिफेंस ଏଇଟା ମାନେ RTI ର ପରିଭିରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ର ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଥିଲା ରାଫାଲ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ସେଟା ନ୍ୟୁଜ ରେ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ 2020 ରେ। ତ ଏବେ ମେ ବି ପଚାରି ନପାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାର ଥିଲା ନା ସେଟା ନ୍ୟୁଜ ରେ ମଗା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ସେଇଟା ଆଉ PMRF ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବି ସେଟା ନ୍ୟୁଜ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଥିଲେ ମେ ବି କୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଯାକ ଦେଇ ହବନି। ପଚାରିବେ ତ ତମେ କହିବ ସାର୍ सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्यूरिटी, डिफेंस, इंटरनल सिक्यूरिटी ସେଇଟା purview of and private information. For example, ଆଜ୍ଞା प्राइम मिनिस्टर घरे रोसई घरे प्राइम मिनिस्टर कोन कोन खाइबा होची केतेरा सिलिंडर এটা प्राइवेट इन्फॉर्मेशन that cannot be given. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Section related କହିବ sir I am not aware about it ଯଦି ପଚାରିବେ। section it very difficult. सेकेंड ईयर सी कहि दो सेकेंड ईयर सी तमर मने अछि सेकेंड ईयर सी कहि पारो सेकेंड ईयर सी फर्स्ट रिपोर्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन द मास्टर की टू गुड गवर्नेंस बाकी सेक्शन टा टिके डिफिकल्ट। अच्छा करप्शन रे तो भरिची क्वेश्चन करप्शन। अच्छा एबे बहुत लोग धरा पडुचंती एटा गोटे क्वेश्चन हे पारे कि रिसेंटली द स्टेट विजिलेंस कमिशन हैज कॉट many serving and retired government servant who has amassed crores of rupees. So what do you think, what is the reason of corruption in Odisha administration? এটা ଗୋଟେ क्वेश्चन हे पारे कि काहे की माने गवर्नमेंट कहूची जीरो टॉलरेंस टुवर्ड द करप्शन, सेंट्रल विजिलेंस कमिशन अछि, RTI आसी गलानी, IT हे गलानी, स्टिल देयर इज करप्शन, व्हाई सो? अच्छा शुभ कल्याणी तमे एतार आंसर दियो, यू आर ऑलरेडी वर्किंग, यू गिव मी दिस आंसर दैट एते हिला परे भी काहे की एबे भी एडमिनिस्ट्रेशन रे करप्शन चली छै। ସାର୍ ଆନ୍ସର ଟିକେ ଟାଇମ ପରେ ଭାବିକି ଟିକେ କହିବି ସାର୍। अच्छा कहा माइंड रे अछि एनीवन आउ की हे जदी भाबुचो कि आंसर दे पारो? Sir, some legal loopholes in administration, so that due to this, the persons who indulged in corruption, they get their way from, so that they can earn money by this process. Sir, ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ସେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର କୋଟ୍ ଗୋଟେ ମେନସନ କରିପାରିବା, just is it impossible to taste the honey which is at the tip of the tongue, similarly if it is hard for a public ସେଇଟା servant. ଦେଖ लिसन ସେଇଟା इंटरव्यू रे कहिले कोन हबो ना मु भाबुची ସେମାନେ ଭାବିବେ ବୋଧେ ପିଲା ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି କରପ୍ସନ କୁ। ଆଜ୍ଞା sir, इंटरव्यू ତ କହିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା बट ସେମାନେ କହିବେ कि नहीं सिस्टमिक करप्शन दैट इज अ टाइप ऑफ करप्शन मु कहूची कि करप्शन काहे की अछि बुझ माने क्वेश्चन टा बुझ से माने एते हेला परे भी लोक करप्शन करूचंती तो आर गुटे आंसर कि सर संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन दैट इज अ गुड आंसर कि हम एठी संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन ସାର୍ आउ सोशल एक्सेप्टेंस हे गलानी गुटे टाइप रो दैट इज संस्कृताइजेशन सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन एंड सॉफ्ट स्टेट तुम कहि परिबो कि सर सॉफ्ट स्टेट means people who are involved in corruption they know the legal loophole and how to come out of it.
ସାର୍ ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନ ଇଜ ଏ ଟୁଥଲେସ୍ ଟାଇଗର ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢିଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନର ସେପାରେଟ ପୋଲିସ ନାହିଁ ଯୋଉ ସେ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଯେମିତି ଲିଗାଲ ଲୁଫଲ୍ସ ଯୋଉମାନେ ସାର୍ ୱାନ୍ସ କରପ୍ଟେଡ ଡିକ୍ଲେୟାର ହଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଆସିକି ସର୍ଭିସରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯାଏଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ତାଙ୍କର ଚାଲୁଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବହୁତ ଥର ହେଲା ପରେ ସେଟା ଡିସମିସ୍ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ସର୍ଭିସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଚାଲୁଥିବ ତ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନର ନିଜର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନାହିଁ ସେମିତି କୌଣସି ଆମର ଆକ୍ଟ ଆସିନି ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସାନ୍ସିଟାଇଜେସନ ଅଫ କରପସନ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ବେସ୍ ଲେବୁଲରେ ବି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ପେ ଆଣ୍ଡ ପକ୍ସ ମାନେ ଏବେ ଯାଇ ବି ସାର୍ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପେ ଆଣ୍ଡ ପକ୍ସ ଟିକେ କମ ଅଛି ତ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଯେହେତୁ ଇନଫ୍ଲେସନ ହଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେ ଆଣ୍ଡ ପକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପାଉନି ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବି କରପସନରେ ଇଣ୍ଡଲଜ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ବେସିକ ରିଜନ ଲାଇକ୍ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଆରଆଇ ହେଲେ ଅମିନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରୁ କଣ ପାଇଁ ତମମାନେ ଏମିତି କରପସନରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦିଆହଉଛି ଆମେ ସେଥିରେ କଣ କରିବୁ ଏତେ କାମ ପ୍ରେସରରେ ଆମକୁ ସେ ପଇସା ପାଉନି ସୋ ସେଥିପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ କରପସନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ସାର୍ ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ବୋର୍ଡକୁ କହିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ ହବ ନାଇଁ ଦେଖ ସେଇଟା ତମେ କହିବ ନାହିଁ କି ସାଲାରୀ କମ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଠିକ ହବ ନାହିଁ ବାକି ସବୁ ତମେ ଯାହା କହିଲ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତ ଆକ୍ସନ ନଉଛି ବଟ୍ ବହୁତ ଗୋଟେ ଲେନ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନଉନାହିଁ ମାନେ ଲୋକ ଯାଇକି ପୁଣି ଯେମିତି ତମେ କହିଲ କି ପିପୁଲ ଗେଟ୍ କଟ୍ ବାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ they go to jail and after sometimes they again join in service so that motivate other corrupt people so the mane punishment should act as a deterrence for corruption but in Odisha or in India the corruption is not that harsh if the sorry if the punishment is very harsh if there is removal from the service then it should act as a deterrent for other people to stay away from corruption but as people are very much confident that if at all they get caught they will come out of it very soon so deterrence ର soft state deterrence deterrence ମାନେ ବୁଝୁଛ ତ ଯେମିତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର deterrence କହନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅଛି ଯଦି it act as a deterrence ତ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ is not that harsh so that it can act as a deterrence and yes state vigilance commission is uh, not that effective state vigilance commission कौन arrest କରି ଦିଏ ତାପରେ charge sheet file करे नहीं ତାପରେ ସେମାନେ ଖାଲି arrest ଯାଏଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଆକୁ ତାଙ୍କୁ procedure ଜଣା ନାହିଁ ତ inefficiency in part of state vigilance commission ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିପାର କାହିଁକି inefficiency ମାନେ ତମେ କହିଦବ କି arrest ହେଲା ପରେ ବି ଲୋକ ଆସିକି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ sensitization of corruption society ରେ and citizen ବି and people also involved in corruption they want to do their work in a fast manner by giving money so people also citizen also part of this corruption process yes professional ethics nahi ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବା ନେକ୍ସସ୍ ରହୁଛି ପଲିଟିସିଆନ ଆଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର କ୍ରିମିନାଲ criminal ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ପତି ସାର୍ ଯେମିତି କି ମନେକର ଓମେନ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତି ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପଲିଟିକ୍ସ ଟା ଟିକେ କରପସନ ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ହଉଛି ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆଣିଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ପତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ହଁ ଯାହା ବି ଆନ୍ସର ଦିଅ ଚଳିବ ବଟ୍ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ଆନ୍ସର ଦବ ଆଉ ହଁ ତାପରେ ବି ସାର୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଗାଲ ସେଫଗାର୍ଡ ବି ରହୁଛି ଯାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ବି ସେଫଗାର୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ହଁ ଲିଗାଲ ସେଫଗାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଲୋକପାଲ ଲୋକ ଆୟୁକ୍ତର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଆମେ ପଢିଥିଲା Sir, କୁହ sir, sometimes the state of transfer also force the honest person to be indulged in corruption. listen I don't think this is suitable answer because as you join the government service you should ready to serve anywhere why should you fear of a transfer
should not fear of a transfer. So you sir cannot କେତେ justify. You cannot justify this by saying that by fear of transfer, I indulge in corruption or someone indulge in corruption. Nah, you are ready to move to anywhere, any part of Odisha. sir political pressure senior pressure ଯୋଗୁ ବି सर ଆମେ add କରିପାରିବା ଇଲେକ୍ସନ ଏକ୍ସପେନ୍ସ କୁ add କରିପାରିବା sir नहीं से तो देखो ସେଇଟା ତ ପୁଣି ପଳେଇଯିବ ପଲିଟିକାଲ ତମକୁ ସିମ୍ପଲ क्वेश्चन ପଚରା ହେଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରେ ସିଆଡକୁ ଯାଉନି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରେ କାହିଁକି ଏବେ ବି କରପ୍ସନ ଅଛି ତମେ ସେ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଡକୁ ପଳେଇଲେ ହଁ ଯେମିତି ମନି ଇକୋନୋମି ସରି ମାନେ ମନି ଆଣ୍ଡ ମସଲ୍ସ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ନେକ୍ସସ୍ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ହଁ ତମର ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦେଲ କି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଦେଖ ସବୁବେଳେ इंटरव्यू बोर्ड सामने स्ट्रिक्ट करिकी रहिबो कि ट्रांसफर रो धमक रे ना ट्रांसफर रो धमक रे ना सीनियर रो थ्रेट रे मु करप्शन रे इन्वॉल्व हेबे हम पचारिबे कि योर सीनियर pressurize you to accept bribe on his behalf what do if you say sir I will not he will threaten you dire consequence he will threaten you for transfer what will you do you oblige हम से माने एमती तुमको पचारिबे ସେମାନେ ଏତେ କୁଲରେ ତମକୁ ପଚାରିବେ ତମେ ଭାବିବ କି ହଁ ଏମାନେ ବୋଧେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ସାର୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ନା ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥାଅ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ସାମ୍ନାରେ କରପ୍ସନ ଡିସଅନେଷ୍ଟି କୁ କେବେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ତମେ କହିବ ସାର୍ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ପଛେ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସପୋର୍ଟ ओके ହଁ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଥ୍ରେଟ୍ କରୁ କି ମୋତେ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଥ୍ରେଟ୍ କରୁ ବଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ abide by his illegal direction towards me ସେମାନେ ଭାବିବେ सर गुड इवनिंग सर ହଁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ सर मु लास्ट गोटे 2 दिन तळर रिपोर्ट गोटे देखुली सर ओडिशा पुलिस हैज बीन an impressive 50% of conviction rate in 2023 sir and conviction rate in disproportionate asset was in 66%. That means there has been a stringent action against the been initiated and taken punishment also. बट सेटा ठीक अछि बट एथि कथा होछि कि फिर भी तो करप्शन एबे गुटे अक्षमिता कार्तिक धरा पड़िला 5 लाख नै कि 8 गडर वीडियो धरा पड़िला आउ 91 वीडियो ऊपर कन्विक्शन रेट सर लास्ट गला वर्ष तो बहुत बढ़ी छी सर पड़िछि आगुरु सर 4% 5% रहउतला गला वर्ष 50% कन्विक्शन रेट करछन सर काली गुटे न्यूज मु रिपोर्ट देखुतली जे ओडिसा रे 91 वीडियो स्कैनर रे अछंती ताको ऊपर चढ़ू हबो ताकर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट धरा हबो 91 वीडियो तो हाँ पचारिले कहबो बट हाँ ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯୋଉମାନେ କି ପୁରା ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଜେଲରୁ 6 ମାସ ରହିକି ଆସିଲେ ଏଣ୍ଡ ଏବେ ପୁଣି ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିକି ପ୍ରମୋସନ ବି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ସେ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ରହୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର so laws should be very strict and stringent towards corruption and government should take a very strict action ଟିକେ ଲୁପहोल ଅଛି ଆମର ସବ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ सर गुटे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ହୁଁ सपोज जेमती कि माने हाईजैक कर नउचंती हमरो जेमती कि माने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट माने जेमती सपोज जणन को जो गोटे पॉलिटिकल लीडर अछंती तांको पूरा हाईजैक करि निया जाय जे आउ तुमको फोर्स करा जाउ जे आइदर तुमे करप्शन करिवो माने किछ गोटे इलीगल काम करिवो आ नहले से तांको जीवनटा चली जीवो तुमे काहा को चूज करिवो जदि एमती पछरंती ना ना माने कहा को माने सपोज तुमको किडनैप करनेले तुमको कहले फोर्स करके तुम्हें ना करप्शन ना ना सर माने गोटे गोटे इम्पोर्टेंट पर्सन जेमती कि हमरो जे माने किछ गोटे पॉलिटिकल लीडर अछंती बा गोटे सीनियर सिटीजन अछंती गोटे नै गले गोटे तार मिनिस्टर को ओडिसा रो किडनैप करके नै गले माओइस्ट माने अच्छा तापर कोन डिमांड करले कहले तुमे इलीगल कामटा करिवो जदि न करिवो ताले हमें किल कर देबो से पर्सन को माने तुमे कोन करिवो से जगह अच्छा माने अच्छा से जाई रे तमे लाइफ सेव करवाडा इंपोर्टेंट हैला ethics moral is good but a human life is more important than ethics and moral ethics and moral and when you have to choose between life and ethics you have to choose someone's life अगेन सर प्रायोरिटाइज करिवो तमे सेठी जदि तमे कहबा आज्ञा मु पूरा इथिकल से मोले मोरू दैट विल बी नेगेटिव
तमे गोटे माने सिविल सर्वेंट हिसाब रे तुमको एवरी ह्यूमन्स लाइफ इज इंपोर्टेंट सर सेम क्वेश्चन काली जने मैम पचारुथिले कि माने तुमे गोटे जो शेल्टर हाउस रे सपोज रहिबा पई जेमति गोटे वल्नरेबल सेक्शन रो अछंती लोक आउ तापरे जने जनरल कास्ट रो लोक अछि तो सेम कथा कहया फास्ट डिजास्टर को कंट्रोल करिया पई हेले फास्ट हम लाइफ टा सेव हो तापर फिर हम डिस्क्रिमिनेट करिया ये कोन माने एससी की जनरल तो आगो तो लाइफ सेव करि कोन कहबो सेठी तमे गोटे शेल्टर रे एसटी एससी अछंती जनरल अछंती तमे माने तमे यदि जनरल माने कहबे हम एसटी एससी मानक से रहिबु नाही तो यू फर्स्ट ट्राई टू convince them persuade them and if they are adamant then you can say at that time you will be very harsh तमे सबले नरम हेले होबने तमे फास्ट तांको बुझेइबो कन्विंस करिवो तांको परसुएट करिवो that this is disaster time this is not a time to think about caste creed etc so you must stay here केते भी टाइम पे अछि तमे रहो तापर जदि जनरल लोक माने तम प्रति एडामेंट हेले तापर तमे स्ट्रिक्ट एक्शन लो तमे कहबो ना now you will do हाँ now you can go जदि मु सेठी हेतांती तो मु फास्ट बुझेई तांती तापर भी जदि से जनरल लोक माने कहितांते ना आमे ताम से रहिबो नै तो मु सेठी कहितांती जहा को रहिबार नाही he can go there ହେଲା जदि हायर कास्ट लोक माने एसटीएससी मानक से रहि परिबे नाही so they can move but I cannot माने मु एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कहा को बाहर करि परिबे नाही ए ग्राउंड रे कि हायर कास्ट माने कहउचंदी कि ना ए रहि परिबो नाही से टाइम रे तुमको इगैलिटेरियन प्रिंसिपल फॉलो करिया को पड़िबो सोशल जस्टिस फॉलो करिया को पड़िबो सिंपल आंसर एटा तमे फास्ट कन्विंस करिवो फास्ट तो धमकेइबो नै फास्ट कन्विंस करिवो परसुएट करिवो जदि से माने परसुएट न करिवो तापर यू विल बी वेरी यू विल टेक ए वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन सर तो करप्शन रे क्वेश्चन पचारि परिबे किछि so never ever justify corruption तमे कहबो corruption in any form is bad in any form is bad corruption तापरे machinery for redressal of citizen grievance the higher caste severely अच्छा जदि हायर कास्ट सिवियरली अच्छा तुम कहूछ 100 लोक रे 90 लोक हायर कास्ट अछंती और 10 लोक लोअर कास्ट अछंती इन दैट केस आल्सो यू इट इज योर रेस्पोंसिबिलिटी देखो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इट इज योर रेस्पोंसिबिलिटी टू सेव एवरी लाइफ हैला तमे गोटे जन को भी बाहर करि परिबो नाही सेटा तमे करि परिबो नाही कि 90 लोक कहउजनी माने 10 लोक को बाहर कर दबो ना तमे you will use your all might तापरे जदि से माने रहिबे नै you go you can go but never ever said that सर मु से 90 लोक पई 10 लोक बाहर कर दोछि सेटा कोन होबो जानि छ सेटा सेटा पुनी माने हमें जो पढि छु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे को कांसेप्ट bourgeois proletariat that bureaucracy is an instrument with which bourgeois exploit the proletariat सेटा हे जो मार्क्स फिलोसफी हे जो सर एठी 10 आउ 90% रेशियो रे सिना एमति हमें करि पारि बट जोटी 50-50% रहयो सर अरे कोठी भी नाही माने मु कहूची तमे काहा को भी सिरु बाहर करि परिबो नै कि तमे कहिबो कि नहीं सर हां सर 50% रे मनकर अपर कास्ट 50% अछंती लोअर कास्ट 50% अछंती सेठी मनकर 50% कहउछन हमें पळेबु एठू ताले सेठी आपण व्हाट स्टेप शुड एडमिनिस्ट्रेटर टेक यू कैन यूज योर फोर्स तमे तापर फोर्स जेमति गवर्नमेंट लोगों को टेकी कि नै जाउची जेतोले साइक्लोन आसुची गवर्नमेंट फास्ट रिक्वेस्ट करूची आज्ञा घर छाडी कि शेल्टर रूम जांतु जो लोक न जाउची गवर्नमेंट तापर टेकी कि नै जाउची so as a administrator you knew at that time you will use force to save people's life because during the period of disaster it is not safe to go outside the shelter room and if people
for the sake of caste, they want to go out, you will use your force, you will threat them. बिल्कुल तमे तमरो सब फोर्स यूज करि परिबो सर हम्म नमस्कार सर हां नमस्कार सर मु जतले क्वेश्चन आंसर देथिली मु फास्ट कहिथिली कि सर मु सेमानकु कन्विंस करिया को चेष्टा करबी कि रहिया पे एकाठी तापरे सेमाने दुई तीन थर मते कहले कि सेमाने राजी होनांती रहबा पे ताहेले तमे कोन करियो ओ से टाइम रे तो एते समय नथियो तम पाखरे बुझेबा पे तो तमे कोन करबो तो तापरे सेमाने तांको तरफ कहले जे अरे तम पाखरे पूरा अथॉरिटी अछि तमे अथॉरिटी यूज करिवो बस जहां मु कहली सेटा आंसर हैला तो मु भी जहां कहछि ना सर रेशनल आंसर जोटा कि बायस नो तो एटा देखो ओपीएससी रो बोर्ड मेंबर भी सेही आंसर कहितंती जोटा कि मु कहली कि तमे फास्ट रिक्वेस्ट करिवो तापरे तमे फोर्स यूज करिवो एठी गोड़ हाथ धरिवार नै फास्ट रिक्वेस्ट न मानिले बाहर जाई पारिबो ही नै you cannot go, I cannot let you go, because at that time you have to protect the life of people by hook or crook हैला सिचुएशनल क्वेश्चन एमिति इके भाबी देले आंसर हे जिवो अच्छा तो करप्शन हे गला तापरे देखो सिटीजन्स ग्रीवेंस रिड्रेसल रे एबे मुख्यमंत्री गोटे स्टार्ट करिसंती ग्रीवेंस रिड्रेसल every Monday is a grievance day, and CM कहिसंती कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल तो कहि परिबे तमे माने पचारि परिबे कि ग्राउंड लेवल रे कोन ग्रीवेंस रिड्रेसल होउची तो तमे कहि परिबो एट ब्लॉक लेवल grievance redressal होउची at block level grievance redressal is there video redress grievance सेटा तापरे सेंट्रल लेवल रे लोकपाल लोकायुक्त थेला लोकपाल तापरे पीएमओ हैला मिनिस्ट्री ऑफ ग्रीवेंस पेंशन CPG RMS, and recently Prime Minister has reduced the time to solve a grievance from 21 to 15 days 15 day भितर ग्रीवेंस रिड्रेसल होबो एसो जिनस कहबो जोटा जानिचो ग्रीवेंस रे हां तमे जेंति सिचुएशनल क्वेश्चन ना तमे जेते सिचुएशनल क्वेश्चन पचारिबो आमे सेते माने आमे माने भाबी कि आमे माने डिस्कशन करी कि गोटे आमे कंक्लूजन रे आसी परिबा जेमिति एबे से डिजास्टर क्वेश्चन हैला कि करप्शन जणे गोटे लोक रो लाइफ क्वेश्चन अछि आ तार तमरो एटा गोटे क्वेश्चन इथिक्स रे भी आसीतिला so a human or individual's life is more precious than your ethical and jete bole dekho terrorist mananku छोड़ा होउची माने किडनैप करिके नै गले 100 लोकंकु terrorist mananku so you cannot let the 100 people die तमे तीनटा लोकंकु छाडी दियो पुनी धरिबो फ्यूचर रे या तो माने जेल रे रखिबार पॉलिसी ही न करो टेररिस्ट की धरो एंड एनकाउंटर बट केबे कहिबो नै कि तमे कि हां ए टेररिस्ट क्वेश्चन में तमु धरो पचारिबे गोटे प्लेन हाईजैक हे जायछि आउ 100 लोक प्लेन रे अछंती टेररिस्ट माने कहउछंती कि तीनटा टेररिस्ट को छाडो नहले आमे 100 लोकन को मारि दबो आ बहुत ड्रेडेड टेररिस्ट आ बहुत पिला से टाइम रे जोश रे कहंती नै सर 100 लोक गले जानतु आमे तीनटा टेररिस्ट को छाडिबु नाही but that will not a ideal answer because every life is precious तमे से तीनटा टेररिस्ट बाहर को बाहरिबे माने पुनी लोकन को मारिबे फ्यूचर रे कोन होबो ताको एंटिसिपेट करिके तमे 100 लोकन को जीवन इनोसेंट पीपल को माने मारी परिबो नाही so you will let you will try you will give your everything to save those 100 people and in future you will change your policy towards terrorism तापर से माने पचारिबे माने पॉलिसी चेंज माने कोन तो कहबे सर इंस्टेड ऑफ कीपिंग द टेररिस्ट इन जेल देयर शुड बी कहबो नै कि सर एनकाउंटर कर दबो सेटा भी गोटे खराब हैला एनकाउंटर वर्ड टा भी गोटे खराब सर इंस्टेड ऑफ keeping the terrorist for long in a jail there should be a fast track court to solve all cases related to terrorism and they should be given maximum punishment capital punishment এটা কহি পারো তুমি জুডিশিয়ারি কো কেবে ওভাররাইড করিবো নাই
सबले जुडिशियरी को प्रायोरिटी रे रखिबो तुमको कन्फ्यूजन से माने कले भी तुम कहबो अल्टीमेटली जुडिशियरी जहाँ कहबो सेटा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियरी ये दीटा ही फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन रे जहाँ लिखा है सेटा हबो एंड जुडिशियरी जेतोळे हम भितरे कॉन्फ्लिक्ट हबो जुडिशियरी विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम एंड जुडिशियरीज डिसीजन इज फाइनल इन दिस रिगार्ड जहाँ भी तुमको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पचारन तुम कहबो सर जुडिशियरी एडल्ट्री हो एनजेएससी तुम कहबो सर एनजेएससी टा खराब जुडिशियरी जेतु खराब कहला खराब बिकॉज जुडिशियरी इंडिया रे केही नाहंदे जुडिशियरी को चैलेंज करिया ପାଇଁ जुडिशियरी जहाँ कहला सेटा वेद बिकॉज जुडिशियरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियरी कथा फाइनल एनजेएससी खराब खराब कहीं खराब से कहीदेव से क्या गोटे मक रे पचारि मुझे देखी रिलेटेड टू एनजेएससी सेठी जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर कहीं जुडिशियरी कला इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड एनजेएससी can violate the basic structure that's why judiciary reject NJSC okay सेटा कहि परिबो तो सिटीजन्स अच्छा चिलिका को सर नमस्कार नमस्कार सर मते गोटे क्वेश्चन पचारिथिले कटक रे जो फेक मेडिसिन रो बिजनेस चलछि सेटा काउंटर करिया पई तमे कोन कोन करिवो of course state is a regulator strong regulator fake medicine माने से माने आउ किछि चाहउतले माने समथिंग न्यू चाहउतले कोन नो आईडिया चाहउतले फेक मेडिसिन देखो दीटा जिनस फेक मेडिसिन रो उत्पत्ति स्थल होची माने शॉर्टेज दीटा जिनस पे फेक मेडिसिन बिक्री हुए गोटे सस्तार बिक्री हुए तुम्हें यदि गोटे ओरिजिनल मेडिसिन 20 टंका तो फेक मेडिसिन 15 टंका रे तुम्हें फेक मेडिसिन किनिकी नब सेटा गोटे एंड सॉफ्ट स्टेट एटा भी गोटे पुअर रेगुलेशन सॉफ्ट स्टेट तापरे माने शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन जो गोटे मेडिसिन रो शॉर्टेज मु जहाँ भावुची माने मेडिसिन सप्लाई रे जो गोटे गैप रही जाउची गोटे वैक्यूम रही जाउची से वैक्यूम को एमाने फुलफिल करूछन आ जदि रेगुलर मेडिसिन सफिशिएंटली मिलंता कम दाम रे मिलंता तो के फेक मेडिसिन को जानते नहीं आ गोटे कथा फेक मेडिसिन किए बिकुची मेडिसिन स्टोर वाला बिकुची गोटे कंपनी रो मेडिसिन रे जदि ताको 2 टका प्रॉफिट होची तो फेक मेडिसिन रे तो 20 टका प्रॉफिट होची तो तारो ग्रीडी नेचर पई से बिकुची तो अच्छा ताको केमिति अटकेइबो कहिले तो तमे कोन आंसर देलो एनफोर्समेंट रेगुलेशन हां strict सर ये action दुटा कहले सर strict action against those manipulator anyone found involved in this surplus medicine there should be very strict punishment citizen awareness citizen can there must be some technique so that citizen can segregate original from duplicate सेटा भी पारे स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करिवो सिटीजन अवेयरनेस बढ़ाइबो आउ पनिशमेंट माने कैपिटल पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू दोस पीपल तो गुटे सेटा डिटरेंस बढ़ाइबो फ्रीक्वेंट रेड ड्रग एंड एमजी कहले जो ड्रग एनफोर्समेंट स्क्वाड रे स्ट्रॉन्ग ड्रग एनफोर्समेंट स्क्वाड रखिबो से माने फ्रीक्वेंट जाई कि चेक करिवे जोडी जोडी मेडिसिन हुए एंड यस सिटीजन अवेयरनेस इज बहुत इंपोर्टेंट देखो आमे कहीं की फेक मेडिसिन किनु ना गोटे एमती गोटे एग्जांपल दोउजी तुमको फेक मेडिसिन रिलेटेड सब बेले तमे यदि गोटे भलो मेडिसिन दुकान को जीवो रविंद्र मेडिसिन दुकान को गलो कि जेते भी अछि मेडिसिन दुकान सेठी तमे सेठी तमे पाई जीवो ओरिजिनल मेडिसिन हैला एटा कंफर्म भलो मेडिसिन दुकान रे तमे ओरिजिनल मेडिसिन पाई जीवो तुम यदि पान दुकान रे मेडिसिन रखुची साइड रे किराना दुकान रे जाके मेडिसिन किनुछ चांसेस अछि सेठी से माने डुप्लीकेसी काहे कि गोटे ड्रग एनफोर्समेंट स्क्वाड जेतेबेले आसंती से माने मेडिसिन दुकान जाके चेक करबे मेडिसिन ना कि किराना दुकान और पान दुकान जाके चेक करबे
तो सिटीजन अवेयरनेस बहुत इंपोर्टेंट सब जगह रे फेक अंडा फेक रसुण तुम यदि चिन्ही गल गोटे कि हाँ ये फेक अंडार सिंबल तुम बंची जीव आउ किसी यदि कहा पाखरे आइडिया अछि यू कैन शेयर एनफोर्समेंट अवेयरनेस और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ये तीनटा मु कहली सजेशन ता बाहर यदि कहा पाखरे किसी यदि आइडिया अछि हाँ कैंसर लाइसेंस रे स्ट्रांग एनफोर्समेंट रे जीव कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दबो तांको which act as a deterrence to other people. अच्छा तो सिटीजन ग्रीवेंस रिड्यूसल टा बहुत दरकार Sir, नमस्कार. हाँ नमस्कार Sir, regular audit and inspection କରିପାରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ sir. हाँ सर एनफोर्समेंट भितर जीव सब Okay, sir. एनफोर्समेंट माने कोन पूरा माने ड्रग लाइसेंस चेक करबा को नै कि रेड को नै कि सब किछि से एनफोर्समेंट रे जीव पूरा केमदी मु कहली स्टेट एज ए रेगुलेटर Okay, sir. अच्छा अच्छा तो सिटीजन ग्रीवेंस रिड्यूसल रे केबे काहू क्वेश्चन मु तो सुनी नै पचारि पारंती लोकपाल लोक एक्ट थेला कि सेकंड ईयर से कोन कहिछि सेकंड ईयर से कहिछि लोकल लेवल ओम्बुड्समैन सिस्टम try to use second year in your answer हैला सेटा टी तम आंसर को स्ट्रेंथन करिवो सेकंड ईयर से रो जदी कहि दबो से माने इंप्रेस हे जिवे कि हां पिला जानि छै सेकंड ईयर से कोन तापर सिटीजन चार्टर बेसिकली जदी पचारिबे सिटीजन चार्टर दी लाइन आंसर दबो it's a declaration made by a public agency about the services it provides. Simply, this is citizen charter. The services it provides, the cost of the services, the time duration for the services, and the person concerned to provide this particular services and grievance redressal mechanism available. This is citizen charter. So, do you think citizen charter is successful? Yes, sir. To a great extent. Most of the government office in Odisha is come out with citizen charter, and gradually with increased citizen awareness, citizen charter can certainly bring a reform in administration, um, transparency बढ़ेगा, accountability बढ़ेगा, citizen centric administration बढ़ेगा, and provide best service to the citizen. Yes, Odisha Right to Public Service Act. हाँ देखो ओडिशा राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट सिटीजन चार्टर भी जोटा कहिछि सिटीजन चार्टर कहिछि कि सर्विस citizen should get this particular service ओडिशा राइट टू सर्विस राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट रे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा गोटे स्टेप आकु जाई कि कहिछि कि yes citizen has a right to get this public service and if citizen is not getting a particular service in this particular time citizen can complain or strict action can taken against the public authority. This is Indian charter. Now listen, एटा तो आमे गोटे ओवरऑल डिस्कशन करला ता परे भी किछि भी तम माइंड रे काली भी क्वेश्चन आसु यू कैन आस्क कोडी के मॉक दोचो किछि क्वेश्चन रे फसिलो यू कैन आस्क मी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत थोरो पचारि जंती so delegated legislation when parliament delegates its legislative power to the executive it is delegated legislation. So why parliament delegate? Because parliament face certain limitation like shortage of time, shortage of expertise, shortage lack of ground knowledge. So it delegate. এটা হয়ে গেল what is administrative law? Father of administrative law জানিছো ডাইসি সেতিকি জানিতো ডাইসি administrative law মানে very simple law there are certain rules and law that regulate the behavior of administration that is administrative law. Interview सबले चेष्टा करिवो गोटे दिन लाइन भीतर आंसर सारिबा पय we are not supposed to write a 20 marker there. So there are certain rules and law that guide the behavior of administration. Behavior of administrator is administrative law. Dicey is the father. What is rule of law? A set of law that is applicable for every individual in a country is rule of law.
How administrative law and rule of law is different? Administrative law is only for member of administration. Rule of law is for both member of administration and citizen. This is the difference between administrative law and rule of law. ହେଲା ସେତିକି ଆଉ କିଛି ପଚାରିବେନି ଡ୍ରଏଡ୍ administrative France ରେ ଅଛି ଡ୍ରଏଡ୍ administrative one code is for citizen, one code is for administrator. Achha, do you think rule of law is present in India? Yes, sir. In India, rule of law is prevalent, but the president and the governor get immunity from prosecution while they are in office. So that is a particular privilege and not a difference. Delegated legislation है तापरे administrative adjudication CAT, SAT, JET. When administration solve dispute, when administrator fill the shoes of judiciary, it is known as administrative adjudication. CAT, SAT, JET. So what is the need of administrative adjudication? মানে you need faster justice, you need cost effective justice. Judiciary is huge pendency of case in judiciary, and administrative matter need to be solved as an earliest, otherwise it result into policy paralysis. The charta point କହିବ why you need administrative adjudication. ଏଠୁ କିଛି क्वेश्चन ସେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେମାନେ ପଚାରିବେ administrative reform ରୁ. I don't think they will ask. And এই जो डायग्राम टा कली एटा देखो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया 1947 गोटे फर्स्ट ईआरसी आसीथिला 64 रे तापर 1991 रे डेवलपमेंट एलपीजी हैला गुड गवर्नेंस पैराडाइम हैला मेजर जदि से मानको पचारिले मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस तो फर्स्ट ईआरसी कथा कहइबो तापरे गोटे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सेटा गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तापरे पीआरआई गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिटीजन चार्टर इज आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तापरे आईटी आसिला तापरे सेकंड ईआरसी एंड सेकंड ईआरसी जेतोडा आसिला आरटीआई भी आसिला. These are major administrative reform in Indian administration. है ना सेकंड ईआरसी बाबदरे पचारिबे कहबो सेकंड ईआरसी बाबदरे जदि पचारिबे 15 report second ERC headed by Birappa Moili submitted 15 report तापरे यदि पचारिबे can you tell us any report कहि दबो first report कहबो third report कहबो fourth report कहबो sixth report कहबो 10 11 12 13 14 15 10टा report तो पूरा घोषा आइछि तो 10टा report कहि दबो तमे. If they ask you question related to IT, that what is the role of IT in administration? এটা তো IT in administration you are aware about it সেটা পচারিবে নে e-governance particular role মানে in present day how IT or e-governance has transformed administration ସେଥିରେ ବି ପவர் ତମେ ୟୁଜ କରି ପାରିବ e-governance ରେ administration ର କେମିତି transformation ହେଇଛି administration ର efficiency effectiveness କେମିତି ବଢିଛି you can say this. ଆଉ ଯଦି এই particular unit 6 উপরে কাହାର যদি তমর কিছু কোশ্চেন আছে তো you can ask me. Unit 5 unit 6 both কিছু যদি কাହାର কোশ্চেন আছে তুমি পচারি পারো. Comparative public administration रे गोटे क्वेश्चन आसीबो who is father of comparative administration if they देखो ट्रिब्यूनल माने कोन एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन सेटा होची ट्रिब्यूनल when administration solve matter administration
play the role of a judiciary. So a tribunal है जोटा कि cat, sat and jet. These tribunal are also a medium to solve the grievance of employee. Civil servant मानकर grievance दूर करने पाई tribunal करा है. Article 323, 323A, 323B. है ला. तो tribunal रे कौन? Tribunal रे member of administration भी रहती है, judiciary भी रहती. And tribunal are expertise as they are expertise in administration. They can solve administrative matter in a better way, in a competent way, and in a fast way, cost effective way that result into no policy paralysis. Administration can take faster decision. Yes, quasi judicial, constitutional body. So father of comparative public administration Riggs, who is the first comparativist? Woodrow Wilson. Hello. Comparative public administration, is it any relevance today? Yes, definitely, because comparative public administration result into comparative public administration आसिला तापरे death हैला death पर rebirth हैला जहाँ को हमें NCPA को हैला new comparative public administration NCPA or IPA international public administration. The concept of global constitutionalism, the concept of supranational body, and in present day we are living in an era of global constitutionalism, where the role of supranational body like World Bank, IMF, UN is over administration of India. For example, sir, SDG, Sustainable Development Goal. India is taking many initiative to fulfill Sustainable Development Goal. That is global constitutionalism. That is international public administration, which is the rebirth of comparative public administration. So, आज डेट में comparative public administration अच्छी in the form of new comparative public administration. ହେଲା तो एमती यदि कहीदेल माने क्या बात कहीकि खुशी रे मार्क देबे तमे यदि जस्टिफाई करदेल कि हां सर comparative public administration अच्छी. Ecology, what is ecology of administration? ना एटा पचारिबे नै मु टिके बेसी भीतर को पढौछि. हाँ एटा क्वेश्चन ही पारे. Do you think in Odisha do you think the ecology as a administrator you face same type of ecology or it is different? So सेटा answer होगा sir different, because the ecology of administration depend on the surrounding, economy उपरे, culture उपरे, people उपरे. तो तमे गोटे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट रे तमे वीडियो होबो और गोटे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट रे वीडियो होबो, इट इज डिफरेंट. गोटे एग्रीकल्चरल ब्लॉक रे वीडियो होबो और गोटे इंडस्ट्रियल ब्लॉक रे वीडियो होबो, इट इज डिफरेंट. तो इकोलॉजी डिफरेंट करछि, गोटे ब्लॉक रो आ गोटे ब्लॉक गले भी इकोलॉजी डिफरेंट करछि. एंड इकोलॉजी हैज डेफिनेटली इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. हां एटा गोटे क्वेश्चन आसी पारे. What is development administration? Administration led development process is development administration. Administration led development process. That's one line. Because administration is in the forefront of development process. এটা হলো development administration. তারপরে theories দরকার নেই তুমি. মানে the concept of development administration has started in the era of comparative public administration. Here also we have Riggs, Pyatt, Diamond, George Gant. তারপরে ইন্ডিয়ার সে মহান one Indian theorist in development administration, Dwivedi. तो एतिकी development administration. Bureaucracy and development कौन? Role of bureaucracy in development. Bureaucracy as an instrument to ensure development. So that is bureaucracy and development. Bureaucracy as a instrument to development process. But due to certain limitation in bureaucracy,
bureaucracy, instead of becoming a vehicle for development, bureaucracy become a obstacle to the development process. এটা এবারে কোন কোন লিমিটেশন সেটা তুমি জানিছো। So that is bureaucracy and development. Bureaucracy should be a vehicle for development. An instrumental aspect of bureaucracy is a vehicle for development. But in reality, what we found? Bureaucracy become institutional. Why bureaucracy become institutional? Because imbalance polity. And an institutional bureaucracy is hindrance for the development process. Ethic. তারপরে development administration and administrative development. দেখো, development administration is two part. One is development administration and one is administrative development. So development administration is development of administration. Recruitment, training, position classification, promotion. These are all part of development administration. Administrative development means administration of development process. So which is more important? Development of administration. जो तुमरो रिक्रुटमेंट हबो, तुमको ट्रेनिंग दिया हबो, तुमको गोटे दक्ष प्रशासक बना हबो। तमे गोटे दक्ष प्रशासक होला परे तमे एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट करि पारो। Then you ensure administrative development. So development administration, administrative development. If the question asks, because हमें पूरा syllabus टा टिके ओवरऑल देखि कि जाइथिबा जेमति किछि भी क्वेश्चन पचारंतु प्रॉब्लम न हो। Public policy, public policy, public policy, public policy. अच्छा, एमती तो public policy क्वेश्चन पचारिबे नाही, but public policy रू पचारि पारंती कि citizen participation in public policy. And Odisha government has recently, Odisha government, Delhi government, they have taken they have taken many initiatives to ensure citizen participation in administration. Recently, Odisha government wants citizen to give their idea related to budget. That is citizen participation in policy, because budget is also a policy. Citizen policy formulation किए करे legislator. Legislator formulate policy. Legislator तापरे executive political executive and किए secretariat they formulate policy. Policy formulation किए करे main legislator নহলে political executive plus secretariat. Implement किए करे directorate or line. Directorate or line agency they implement policy. Secretariat or staff formulate public policy. Evaluation किए करे CAG. Audit. The concept of social audit. Policy evaluation by Gram Sabha. Citizens participation in policy evaluation. PRI ऊपर क्वेश्चन पचारि पानते तुमको जिला परिषद हला पंचायत इजी क्वेश्चन पचारुଛନ୍ତି ସେମାନେ पचारिया କଥା व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राम सभा मिडिल टियर की अरे एटा तो किहे भी कहि देबे मिडिल टियर पंचायत समिति मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होंती तांकर चेयरमैन इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए माने दिस इज नॉट ए ओपीएससी लेवल क्वेश्चन तो फॉर्मुलेशन किए करे इवैल्यूएशन किए करे इंप्लीमेंट किए करे this you should know CAG social audit and तमे जहां आंसर दरो ता बैकग्राउंड रे पुनी सोशल ऑडिट कोन सोशल ऑडिट किए करे तापर सोशल ऑडिट रेगुलर होची कि ई सोशल ऑडिट सक्सेस is there real participation or pseudo participation social audit is a compulsory provision or voluntary provision बहुत किसी क्वेश्चन आ सकता है
पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कौन क्वेश्चन पचारि पारंती रिक्रुटमेंट मेरिट बेस्ड रिक्रुटमेंट ओपीएससी यूपीएससी ओपीएससी निजे रिक्रुटमेंट करूछ कौन पचारिबो रिक्रुटमेंट ऊपर आ रिक्रुटमेंट रे लेटरल एंट्री क्वेश्चन आसी पारे लेटरल एंट्री बहुत लेटरल एंट्री रे बहुत हो हंगामा हेछि हल्ला हेछि तो लेटरल एंट्री क्वेश्चन आसी पारे व्हाट डू यू थिंक लेटरल एंट्री इज गुड और बैड तो इठी गुटे भलो आंसर हैला तमे कहिबो कि देखो पंचायत रे तीनटा टियर अछि जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत आ तोड़े ग्राम सभा रे ऑल एडल्ट रजिस्टर वोटर ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज पार्ट ऑफ ग्राम सभा इटे किछि इलेक्टेड नाही ग्राम पंचायत रे बोथ मेंबर एंड चेयरमैन डायरेक्टली इलेक्टेड चेयरमैन इज सरपंच डायरेक्टली इलेक्टेड पंचायत समिति रे मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड चेयरमैन इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड जिला परिषद मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड चेयरमैन इनडायरेक्टली इलेक्टेड सो समस्त इलेक्टेड मेंबर किए डायरेक्ट किए इनडायरेक्ट ग्राम सभा all adult don't say that all adult member of that village all adult registered voter of that village because jodi jone registered voter nahi he cannot हाँ ग्राम सभा रोल अच्छी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ग्राम सभा अरे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करूची नीति आयोग एंट्रस्ट ग्राम सभा टू मेक इट्स प्लान ग्राम सभा पॉलिसी फॉर्मुलेशन रे अच्छी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन रे अच्छी पॉलिसी इवैल्यूएशन रे अच्छी पॉलिसी इवैल्यूएशन सोशल ऑडिट नीति आयोग ग्राम सभा को कही पॉलिसी फॉर्मुलेशन करबा पई so yes ग्राम सभा प्ले very important role and it is a compulsory provision under 73rd CA the problem is that the administration is not take it in a very serious way to establish gram sabha तो रिक्रुटमेंट हाँ रिक्रुट देखो लेटरल एंट्री कथा कहूँ आज गोटे आर्टिकल आसाला हिंदू रे तो लेटरल एंट्री यदि तुम पचारे तो कह यस सर टू लेटरल एंट्री इज गुड फॉर ए शॉर्ट पीरियड that we need expert but simultaneously government of India should focus on making expert out of the generalist IAS how so तो तमे कहबो जो लेटरल एंट्री रे एक्सपर्ट माने आसुचंती गवर्नमेंट शुड फोकस टू मेक दोज एक्सपर्ट आउट ऑफ द जनरलिस्ट आईएएस ता पई सेकंड ईयर से कहिछि डोमेन एक्सपर्टाइज तो किछि वर्ष हला परे एंड यस गोटे डोमेन एक्सपर्टाइज होबो एंड यू गिव आईएएस ट्रेनिंग इन प्राइवेट सेक्टर एटा हे गला परे आफ्टर 10-15 ईयर the expert we take from the private sector no needed because IAS become expert themselves does administration has inferiority complex about PRI how to overcome this देखो सेमती नहीं inferiority complex नहीं तमे कहि पारो कि the state is not devaluing desire functional and financial authority to PRI so the PRI become over dependent on state government over dependent on administration and administration try to control PRI सेटा कहि पारो bureaucratization of PRI
तो केमती करिवो ताकू तमे ब्यूरो पीआरआई को स्ट्रेंथन करिवा पाई तो स्टेट गवर्नमेंट शुड devolve all financial power, functional power. PRI members should get proper training. They should have autonomy in personnel recruitment. Fund scarcity, functional scarcity, माने fund scarcity दूर ही गले PRI रो strength बढ़ी जिवो. Strength बढ़ी गले जो inferiority complex को जो तमे इटा होगा. There should not be any panchayat pati. Encourage more and more capable people, educated people to associate in PRI. Suppose तमे वीडियो हेलो गोटे पिला जी 4 थर ओपीएससी प्रिपेयर कला इंटरव्यू देला से वीडियो हेला तो कोन सेम लेवल नॉलेज रे तमे इंफिनिटी केमती करिवो तमे जते बडे ब्यूरोक्रेसी जते बडे देखुची गोटे अंगूठा छाप अछि पीआरआई रे कि सरपंच पति अछि माने किछि जानु नांती सो इंफिनिटी स्टार्ट बट सेठी गोटे यदि ओपीएससी 4 थर इंटरव्यू देला पिला सरपंच अछि so definitely you cannot have any inferiority complex. तो लेटरल एंट्री हैला ट्रेनिंग रे रिसेंट मिशन कर्मयोगी कथा कहइबो जदि पचारिबे व्हाट इज मिशन कर्मयोगी यू आंसर दैट मिशन कर्मयोगी कोन कैपेसिटी बिल्डिंग करूची एडमिनिस्ट्रेशन माननको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को फोकस करा होची पोजीशन क्लासिफिकेशन देखो इंडिया रे नाही इन इंडिया वी फॉलो रैंक क्लासिफिकेशन position classification followed in developed country and India is slowly moving towards position classification through the concept of domain expertise promoted by second ARC in its 10th report personnel administration. They pacharibe ki what is good position classification or rank classification so tame kohibo sir as a developing country like India we should have mix of both position classification and rank classification for higher position. For higher position, position classification should be given importance, but for lower administrative position, we should continue with rank classification. As we have, administration need to do a very diverse function and shortage of personnel. So, हमें both mix of position and rank करी पारिबा. How performance appraisal is very important. So performance appraisal is very important to ensure efficiency of the organization, ensure efficiency of the particular employee. Through performance appraisal, we can find the reason of lacuna, a reason of limitation, a reason of poor performance of a particular employee, and suggest alternative method to raise his performance. Promotion कौन होगा कथा seniority was merit तमे कहबो sir it should be balance between seniority and merit so that no one get dissatisfied खाली seniority नो कि खाली merit नो तापरे employee relation इटा देखो neutrality and anonymity yes इटा question आसी पारे इटा गुटे burning topic neutrality anonymity so yes you should know about this that what is neutrality what is anonymity এটা কোশ্চেন পচারি পারନ୍ତି grievance redressal mechanism of this is employee JCM cat sat jet recently JCM is in news the cabinet secretary is chairman of JCM and recently the prime minister Modi has met with the association of the employee regarding their concern related to the old pension scheme ଏବେ जो unified pension scheme ଆସିଛି तो JCM कौन joint consultative machinery for arbitration it's an institution established to redress grievance of employee it solve conflict between employee and employer that is political executive and civil servant and JCM follow
the principle of Intrview, informal relation, informal communication. What is code of conduct? Code of conduct is a set of rule to be followed by civil servant. How they conduct themselves. Civil servant must follow a set of rule to conduct themselves in order to ensure efficiency in organization. That is code of conduct. Integrity, integrity also. It is a moral principle, set of value to be followed by civil servant. Integrity to ensure good governance, ensure citizen-centric governance, ensure instrumental aspect of bureaucracy. देखो many हाँ तुम्हें कही पारो कि yes sir when bureaucrat join politics it is of no harm because the constitution has not barred anyone joining politics after resigning they can join politics, no problem in it. Many foreign country also bureaucrats are joining politics, and it is to some extent it is good that they use their rich experience and knowledge while making policy when become politician. But sir, there must be a cooling period. There must be a cooling period for some bureaucrat to join politics after retirement, else it will result into violation of neutrality. ତମେ ଆକୁ neutrality ରେ connect କରିବ. Bureaucrat can join politics. They can they bring their rich experience in policy making. There is no problem, but there must be a cooling period of some year before some bureaucrat join politics after retiring. And if a bureaucrat is allowed to join politics immediately after retirement, this might result into breakdown of neutrality in civil service. This might result into politicization of civil service. ହେଲା ତ ଭଲ ଖରାପ ସବୁ କହିଦେଲ, କାହିଁକି ଖରାପ ବି କହିଲ, କାହିଁକି ଭଲ ବି କହିଲ, and ତମେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇଦେଲ କି there must be a cooling period. Okay, ଗୋଟେ cooling period ରହିବା କଥା. That particular cooling period will reduce the chance of breakdown of neutrality in civil service. ନହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ ଏମଏଲଏ ଟିକେଟ ପାଇବ. ओके अच्छा हो ठीक अच्छे बाकी काली यूनिट 10 ରୁ स्टार्ट करिबा एंड यू ब्रिंग योर क्वेश्चन तमे एमती सिचुएशनल क्वेश्चन गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं के आसो वी विल डिस्कस एवरीथिंग ओके